क्विक चेक मार्केट का 150 पॉइंट की मजबूती के साथ 19,680 पर निफ्टी ट्रेड करा है और मिड कैप 300 पॉइंट ऊपर के साथ 44,600। लेकिन नजर जानी चाहिए आपकी मिड कैप में 1.25% ऊपर 516 पॉइंट की मजबूती 40,620 पर इस वक्त खड़ा हुआ है और जबरदस्त तेजी है ब्रॉडर मार्केट में। 788 गिरने वाले शेयर्स के सामने 2043 शेयर्स में तेजी है। इस तरह की तेजी ब्रॉडर मार्केट में, और ये हरी और लाल लाइन जो है पहले पैरेलल चल रही थी, अब आप देखिए आखिरी में थोड़ी सी और वाइड हो रही है, तो अब जो है और ज़्यादा बढ़त वाले शेयर्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। क्विक चेक मार्केट का लेते हैं, जतिन गेडिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, आज तो बड़ी तेज़ी लौटी है, सस्टेनेबल है ये लॉन्ग साइड के लिए? हाँ, डेफिनेटली। गुड आफ्टरनून नीरज जी। हमें लगता है कि ये जो कल की गिरावट थी वो एक्सपायरी रिलेटेड ज्यादा थी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म जो हमें एक करेक्शन देखने मिला है वो बहुत ही ओवरसोल्ड है और एक डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है हमें छोटे टाइम फ्रेम पे, आर्ली चार्ट्स के टाइम फ्रेम पे। इसके लिए हमें लगता है कि पुल बैक डेफिनेटली ऑन दी कार्ड है। हमें लगता है कि ऊपर में 19,840 19,900 तक भी ये पुल बैक जारी रह सकता है। इसके लिए निफ्टी में हमारी बाइंग की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 19,570 के स्टॉप लॉस पे लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 19,840 और उसके ऊपर 19,900 के करीब। बैंक निफ्टी की अगर जो मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक पुल बैक लग रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं HDFC बैंक जो इतने दिनों से गिर रहा था वो अपने क्रूशियल फिबोनाची सपोर्ट्स पे आ गया है, तो हमें एक पुल बैक डेफिनेटली ऑन दी कार्ड्स लग रहा है और एक्सिस बैंक फ्रॉम दी हेवीवेट्स भी पॉजिटिव लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग करके चला जा सकता है। हमें लगता है कि ऊपर में इनिशियली 45,000 और उसके ऊपर 45,200 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। हमें इसमें 44,380 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चलना जा सकता है। इसके लिए दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगता है कि ये रैली जो ये और पुल बैक है वो सस्टेनेबल है और एक लंबे वीकेंड के बाद फिर से ये जो पुल बैक है वो कंटिन्यू रह सकता है। जतिन, दो स्टॉक पे आपकी व्यू चाहिए, एक वेदांता पे और एक ग्लेनमार्क फार्मा पे। ग्लेनमार्क फार्मा 9% ऊपर है आज। पहले मैं वेदांता की बात करूंगा। तो वेदांता का अगर जो मैं डेली स्ट्रक्चर देखूं वो नेगेटिव है। मेरे को लगता है कि आज का जो पुल बैक है वो शायद थोड़ा सस्टेनेबल नहीं हो पाए। अराउंड 232 या 235 के आसपास एक फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलना चाहिए जहाँ पे उसकी डेली मूविंग एवरेजेस है। तो एक पुल बैक आई थिंक एग्जिट करने के तौर पे हमें देखना चाहिए। सेल ऑन राइस का एक स्ट्रेटेजी इसमें अपनाना चाहिए। मेरे को लगता है कि इसमें ट्रेंड नेगेटिव है तो मैं बाई करके नहीं चलना चाहूंगा। और जो ग्लेनमार्क फार्मा की आपने बात की, तो ग्लेनमार्क फार्मा डेफिनेटली वन ऑफ दी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है रिसेंटली। और हमने देखा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 40 डे एवरेज के सपोर्ट के लेके फिर से एक 10% की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन मेरे को लगता है कि अराउंड और एक 30 से 40 रुपीज की अपसाइड पोटेंशियल अभी फिलहाल बाकी है इसमें। मेरे को लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग्स आए थे अराउंड 880 890 वो फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकता है। इसके लिए ग्लेनमार्क फार्मा में पॉजिटिव व्यू रहेगा, लेकिन वेदांता में अवॉइड की सलाह दी। वेदांता में अवॉइड करिए, न्यूज़ ड्रिवन है, कुछ खबरें आई हैं उसकी वजह से उसमें रनअप है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा में अभी भी बाई की राय है। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चलते हैं, बातचीत करते हैं ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बी त्यागराजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागराजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्लू स्टार ने QIP किया, 1000 करोड़ जुटाए उससे, और जिस दिन QIP हुआ उस दिन स्टॉक में 10% की और ज़्यादा उससे एक रैली बनी। जनरली लोगों को लगता है कि QIP के दिन प्रेशर रहना चाहिए क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे था, लेकिन उसके सामने स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रनअप दिखाया। इस रनअप के पीछे स्टोरी छिपी हुई है कि क्यों ऐसी तेज़ी आई, कंपनी के ऐसे क्या प्लान्स हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। त्यागराजन सर, दो सवाल जोड़ के मैं पूछ रहा हूँ। एक तो ये QIP से जो आपने फंड रेज किया है इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा, आप हर साल आपका जो एक्सपेंशन है उससे आपको जो एबिट हो रहा है, एबिटा लेवल पे आप रेस कर रहे हैं, फंड आपको बन रहा है पैसा,
उससे आपके कैपेक्स प्लान ऑलरेडी मीट हो सकते थे अगर आप हर साल 200, 250, 300 करोड़ खर्च करें तो फिर ये फंड रेज की जरूरत क्यों थी? Good afternoon, Neeraj. It's a pleasure talking to you. All valid questions. So first of all, the QIP was a successful one, and we are thankful to the investors who have come in new and who are continuing to enhance their position by placing their trust in the company and in our operations. So we have raised rupees 1,000 crores, as you are aware, that we have some big new names coming in like Norges, Fidelity, Atia, and existing foreign shareholders like First State and HSBC have further strengthened their position. Very strong domestic investors like SBI, Kotak, HDFC, Nippon, Birla, they are subscribers to this. And insurance funds like ICICI, Pru, HDFC Life, and SBI Life are also there. Now, there are many more investors as well. Now, the fund has been raised for funding the manufacturing capacity expansion, R&D investments, digitalization expenses, and working capital that is needed for the growth. So obviously, we wouldn't have gone and raised this fund until we have a visibility about the growth and our confidence in delivering it. Because as you rightly said, when you are expanding the capital, we have to also deliver the EPS that equivalent to growth also will have to be delivered. So our growth story is built on the following facts. Number one is domestic air conditioners market is growing. The penetration level is low. And as I had mentioned in one of the interviews to your channel, that the golden period for room air conditioner industry is here. There may be 1 or 2 bad summers, but if you take a 5-year period, the penetration levels are going to improve. And that's why manufacturing capacity is expanding in the country. Within another year, India will have double the capacity of what it had built over many decades. The second part is connected with commercial air conditioning, whether it is shop, showroom, boutique, small hotels. This commercial air conditioning space penetration is growing even in tier 3, 4, 5 towns, which are packaged air conditioning, VRF systems. Commercial refrigeration, exponential growth we are witnessing. Deep freezers, cold storages, and the bottle coolers, many other associated commercial refrigeration products. Construction cycle is on, so there is huge growth, and we are selective there, like factories, data centers, metro railway, airports. That part of it also is growing. For the first time, we are witnessing across all segments in the domestic Indian market, there is huge growth opportunity. And the Blue Star export footprint was lower, and we want to be focused on product exports. We are not into we are not looking at expanding our EPC contracting overseas. Basically making products for the world, which is energy efficient, which is meant for decarbonization, because that technology has evolved in Japan, Korea, China, then in India. So we had to compete in this market. We had to develop those technologies, and we have mastered that. We believe we have an opportunity for selling those products in the export market. So this is the growth direction. सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कॉम्पीट करना चाहते हैं और ग्रोथ की इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैं ख्याल वर्ल्ड का तीसरा बड़ा मार्केट ये आने वाले 10, 15, 20, 30 साल में बनेगा। आप एक नया प्लांट भी लगा रहे हैं सर। ये जो इंटेंस कंपटीशन के बीच में आप कैपेक्स आप लेके आए, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि अगले 3-4 सालों तक अब आपको फंड रेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइदर वे, ना डेट ना इक्विटी, क्योंकि आपका जो 250-300 करोड़ का है वो 1000 करोड़ से हो गया काम। ये प्लानिंग है क्या? Yes, see, some part of the investment had commenced 18 months ago itself through term loans, actually, like, for example, City Phase 1.
Now there is a phase 2 that has to happen within 1 year, phase 3 which has to happen within 1 year. That plant is meant for manufacturing 1.2 million units. What we expanded was only 3 lakh units. So second phase, third phase will have to take place. Commercial air conditioning plant has, which is located in Dadra and Wada, it is in its full capacity. So that within 2 years, we will have to expand the commercial air conditioning manufacturing capacity as well. That's why we bought another 40 acres of land in in Sri City. Now, the manufacturing capacity is happening, one for the growth. The second is also for the profit improvement. You have to do localization. You have to do backward integration, because you know that when we grow, we have to also deliver higher profitability, and no longer it is possible for us to depend on China for getting a few products. It has to be made with our own IP, and then go ahead and manufacture locally with the local component ecosystem that is developing. And that is the other reason why you need additional capacity. त्यागराजन सर, इंडियन स्पेस में बहुत ज़्यादा बहुत सारे प्लेयर्स की एंट्री हो रही है और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है. आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही है और आपने मार्केट शेयर गेन किया है. जो लार्जेस्ट प्लेयर है वो उसने लूज़ किया और बहुत सिग्निफिकेंट लूज़ किया, उसने 5-6% उसका शेयर गया है. आपका बढ़ रहा है, लेकिन जो बड़े फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पे 60 लाख की कैपेसिटी कंप्रेसर का फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो नोएडा में भी और अलग अलग जगहों पे, ये कंपटीशन बढ़ने वाला है. तो क्या फुल वैल्यू चेन में आपका इरादा है या नहीं? It's a good sign. If Indian market is going to grow, you can expect everyone to compete. So there is a ODI World Cup. All are going to come, put their best team forward. That's how they will do. Indian air conditioning refrigeration market is already competitive. It will become competitive. And in our case, we are not only talking about protecting and growing our market share in India, but also make an entry into Europe and North America markets, which means very clearly we have to strengthen our R&D capabilities and our manufacturing capabilities in order to deliver world-class products. So it begins with that I have a unique value proposition to deliver a product exceeding the customer expectation. Significant amount of money is being invested also in digitalization in order to improve the customer experience. So that part of it, again, is very important for us to stay differentiated, that Blue Star is a trusted brand. It is there for 80 years, and that is what is making us to grow and gain market share. The third part of that, which I had explained earlier, that journey has begun. Indian market expects affordable products, and therefore we need to play at all price points. Again, you have to invest in R&D and manufacturing to deliver products at all the price points. We have tested this particular business model and we have succeeded. You have seen in the past couple of years, our market share improvement, our profitability improvement comes out of R&D innovation and cost reduction, making the product affordable prices and customer experience. This journey will continue, and that's what we believe will help us to compete. Tyagarajan sir, in terms of run rate, in terms of margin, market share, everything is fantastic with your company. बाकी से बेटर आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, नंबर्स बोल रहे हैं. लेकिन एक सवाल मैं आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल को सुन भी रहा था, फिर मैंने उसको पढ़ा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इंडियन कंपनीज उस वैल्यू चेन में कंप्रेसर की तरफ नहीं जाएंगी, और वो इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि शायद इतनी ज़रूरत नहीं है इंडिया में, या कोई बनाएगा तो वो बेचेगा कहाँ. लेकिन अगर आपको मार्जिन एक्सपेंड करने हैं या इंडियन कंपनीज को करने हैं, तो ये कैसे मैनेज होगा सर? ये तो बहुत ही, मतलब वैल्यू चेन में हम लोग बीच में खड़े हैं असेंबलिंग में. So the very first part is connected with the compressor is not anymore the heart of the system. So the moment the inverter technology has come in, so you have got what is known as the inverter drive.
So therefore, that particular part does not require huge scale for one to be investing in manufacturing. So we have developed an IP for the inverter drives. I believe we should be the first Indian company to have developed an intellectual property rights for the drives, whether it is a residential air conditioner or commercial air conditioning products. Now, come to compressors. You need a scale for investing in compressors. So Blue Star should cross 1 million units of room air conditioner production, hopefully this financial year. And until we cross something like 1.75 million and come closer to 2 million, I don't think compressor manufacturing is justified. Because there are globally competitive compressor manufacturers who will offer at a much competitive price. And so this is the reason why perhaps Indian players may not be able to. First is there is a technology that required for manufacturing compressors. Then you require scale. So whether Blue Star will never manufacture compressors, that's not the answer. The question is we have to reach a scale. At the end of the day, we need to deliver value to the shareholders, which will come through the ROCE or return on equity. So Blue Star is clearly focused on these two figures. That is, my top priority is ROE, ROCE. Then actually the EPS, which comes through the PBT, then only the market share goal. But I need market share in order to build a scale to deliver. So it is exciting game and it is a tough game. I'm not. I should not sound as if it is going to be very easy. It's a highly competitive market. It's a technology product. As you know, energy efficiency and decarbonization regulations will keep growing. And see, the R&D importance was understood. That's why Mr. Ashok Advani gave that promoter grant of rupees 100 crores. And he understood this, that we have to accelerate that. So far, we have done well, and I am confident that we will deliver, but a lot of work we have to do. परफेक्ट त्यागराजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये इंडस्ट्री इनसाइट देने के लिए कि जब तक एक स्केल पे आप नहीं जाते तब तक कंप्रेसर में उतरना इंडियन कंपनी के लिए ठीक नहीं। एक किसी बड़े इन्वेस्टर ने एक आइडिया मुझे दिया, बताया कि इंडस्ट्री लेवल पे शायद एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह कंपटीशन आगे आने वाला है वो शायद एक चैलेंज पोज कर सकता है। बहरहाल हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी तो अगले 3-4 साल तक की बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, कोई इसमें इश्यूज नहीं लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।